So what so what are the typically welded machine components? The number one is a pressure vessel. हमने रिवेट जॉइंट में स्टडी किया कि प्रेशर वेसल्स आर बेसिकली कनेक्टेड बाय रिवेट्स, बट क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से रिवेट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द वेल्डिंग जॉइंट. तो जो प्रेशर वेसल्स में हैं दे आर प्रेशर वेसल्स नाउ आर बीइंग कनेक्टेड बाय द हेल्प ऑफ ए वेल्डिंग जॉइंट्स. वेल्डिंग जॉइंट इज़ आल्सो यूज्ड इन अ स्टील स्ट्रक्चर. स्टील स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करने के लिए भी वेल्डिंग जॉइंट यूज़ होते हैं. फ्लेंजेस वेल्डेड टू शाफ्ट्स एंड एक्सिल. ना सिर्फ शाफ्ट और एक्सिल के साथ, फ्लेंजेस पाइप के साथ भी जो कनेक्ट होते हैं दे आर बीइंग कनेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ ए वेल्डिंग जॉइंट्स. सो क्रैंक शाफ्ट्स, हाई हाइड्रोलिक टर्बाइन शाफ्ट्स, लार्ज गियर्स, पुली, फ्लाईव्हील्स, गियर हाउसिंग, मशीन फ्रेम्स and base, house and mill stands, they all are being connected by the use of a permanent joint that is called as the welding joints. इसके बाद there are different types of a welding processes. They are categorized broadly. There are different types of welding joint. Broadly speaking, they are classified into the liquid state, or we can say fusion welding, and another is a solid state welding. So what is the liquid state or fusion welding? So fusion welding is a process that uses heat to join or fuse two or more materials by heating them to a melting process. Fusion welding is a process that uses heat to join or fuse two or more components by heating them to a melting point. फ्यूजन का मकसद ही मतलब ही मेल्टिंग होता है, मेल्ट करना. तो जो जॉइनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको हीट करना, उनकी एजेस को हीट करना, जहाँ पे हम वेल्डिंग अप्लाई करते हैं टू मोल्टन स्टेट्स, यहाँ टू मोल्टन मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करना और उसके बाद उनको कनेक्ट करना. द प्रोसेस मे और मे नॉट रिक्वायर द यूज़ ऑफ ए फिलर मटीरियल. ज़रूरी नहीं है कि उसमें फिलर मटीरियल यूज़ हो. Without the use of filler material, the welding is also applicable. External application of pressure is not required for fusion welding process. तो इसमें like in case of electric welding, chemical or liquid state welding में it is not necessary that the pressure is being applied for welding for this welding processes, especially except in the case of a resistance welding where we uses pressure, where substantial contact pressure is required during welding for a sound joining. Efficient joining के लिए pressure is being applied. So electric arc welding, chemical. So liquid state welding is further classified into different categories depending upon the source that is being used to melt the two metals. जो source use हो रहा है दो metals को joining करने के लिए, if the source is electric, so the welding process is known as electric welding. If the source is a chemical, let's say in case of a gas welding, chemical gases are being used, we say that the chemical welding is used. So chemical welding is broadly categorized into gas welding and thermite welding. उसके बाद है laser welding, electronic beam welding. This comes into the category of a liquid state welding. उसके बाद है solid state welding. So जो हमारा material है ये solid है. This is in the state of a solid. So in solid state it is solid state welding is classified into cold welding, diffusion welding and forging welding. So forging is also process of a welding. So अभी हम एक को thoroughly study करेंगे. So number one is now is the electrical arc welding. So what is electric arc welding process? Basically the electric arc welding process is a fusion welding process in which the heat required to fuse the metal is obtained from an electric arc between the base metal and the electrode. So इसमें क्या है कि जो electric arc generate होता है इसके दरमियान बेस मेटल या जिसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, पेरेंट मेटल और इलेक्ट्रोड के दरमियान. सो आर्क प्रोड्यूस होगा और वो आर्क प्रोड्यूस करेगा टेम्परेचर अप टू 6000 to 700 डिग्री सेल्सियस.
So the electric arc is produced when two conductors are touches together and then separated by a small gap of a 2 to 4 mm such that current continues to flow through the air. As we discussed, it consists of a parent metal, deposited metal, crater and an electrode. अब इसमें क्या होगा कि एक crater during the welding process crater is generated. और जो बेस मेटल है जिसको हम पेरेंट मटेरियल कहते हैं, पेरेंट मेटल एंड इलेक्ट्रोड, दे बोथ आर मेल्टेड बाय टेम्परेचर ऑफ आर्क एंड डिपॉजिटेड अराउंड द एजेस. So the distance between the center of electrode tip and bottom of the arc is called as the arc length, or we can say length of the arc. ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रोड है और दिस इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ द फ्यूजन इज. जैसे कि ये आप देखेंगे अपने बुक से कि एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, अ स्मॉल डिप्रेशन इज फॉर्म्ड in the base metal and the molten a small depression is formed in the base metal and the molten metal is deposited around the edges. जैसे इस तरह ये edges के ऊपर deposit होना शुरू होगा, which is called as the arc crater. The slag is brushed off after the joint has been cooled. So the arc welding does not require the metal to be preheated since the temperature of the arc is quite high and already हमने डिस्कस किया वो 6000 to 7000 डिग्री सेल्सियस होगा. और फर्दर अगर हम देखें कि देर आर टू काइंड्स ऑफ आर्क वेल्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड. अगर इलेक्ट्रोड शील्डेड होगा तो दैट प्रोसेस इज नोन एज अ शील्डेड आर्क वेल्डिंग. इफ द इलेक्ट्रोड इज अनशील्डेड सो इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ अनशील्डेड आर्क वेल्डिंग. So when large electrode of filler rod is used for welding, it is then said to be unshielded arc welding. इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोड जो होगा किसी भी इनर्ट गैस से शील्ड नहीं होगा. In this case, the deposited weld metal, while it is hot, will absorb oxygen and nitrogen from the atmosphere. अब शील्ड करने का बेसिक मकसद यही होता है कि जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अवेलेबल हैं, दे डज नॉट रिएक्ट विद द बेस मेटल, या जो हमारे मोल्टन स्टेट में जो वेल्ड है उसके साथ रिएक्ट ना करें और कोई डिफेक्ट प्रोड्यूस ना करें. सो दिस डिक्रीजेज, अगर वो नहीं होगा शील्डिंग तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की जो हैं वो रिएक्ट करेंगी हमारे वेल्डिंग मटेरियल के साथ, और दिस डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड मेटल एंड लोअर इट्स डक्टिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन. अगर अब जब डक्टिलिटी रिड्यूस होगी तो दैट मीन्स कि आपकी ब्रिटलनेस इंक्रीज होगी. तो दिस कॉजेज ब्रिटलनेस and it increases the resistance and it decreases the resistance to corrosion. तो that means कि ये हमारा जो weld होगा vulnerable to the corrosion होगा. In the next, in a shield arc welding, so the welding rods coated with a solid materials are used. The resulting projection of the coating focuses a concentrated arc stream which protects the globules of metal from the air and prevents the absorption of large amount of harmful oxygen and nitrogen. इसमें क्या होगा कि ये जो भी इलेक्ट्रोड होगा वो किसी इनर्ट मटेरियल से कोटेड होगा जो एटमॉस्फेयर की जब वो मेल्ट होगा तो यहाँ पे गैस इमिट होगी, काइंड ऑफ एनी इनर्ट गैस लाइक एक आर्गन हो सकती है या कोई और गैस होगी जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को प्रिवेंट करेगा एब्सॉर्प्शन टू द दिस वेल्ड मटेरियल. So this is called as a shielded arc so this is called as a shielded arc welding process. So basically this is an electric arc welding process. सर आप इसको इस वीडियो में देख सकते हैं. Shielded arc welding is usually accomplished by means of an electric arc formed between the work and a coated metallic electrode. Let's see what happens. When the arc is struck, it almost instantly creates a temperature of about 6,500 degrees Fahrenheit. This melts both the base metal and the metal in the electrode. The metal from the electrode is melted off in tiny droplets, is carried across the arc and mixed with the molten base metal. The force of the arc and the forward travel of the electrode causes the mixed molten metal to be pushed to the rear of the crater where it cools to form a bead.
The movement of this metal toward the rear of the crater and the depth of the crater are an excellent check on the quality of the work. The operator should learn to use it as his guide. At the same time that the metal is melting, the coating on the electrode is being consumed. This takes place slower than the melting of the electrode, which shields the arc and helps direct the flow of metal. It also permits the use of higher currents, with the resultant faster deposit of weld metal. A gas is formed, covering the arc with a protective shield that prevents the exposure of the molten metal to the air and therefore prevents the formation of harmful oxides and nitrides in the deposit. Also from the coating, chemicals acting as cleansing agents enter into the metal to help to remove the impurities. These chemicals with the impurities float to the top and, cooling, form a coating or slag over the bead. This slag causes the molten metal to cool more slowly and has an annealing effect.